Okay, students, today what we are going to talk about, and we are going to talk about is argumentative essays, okay? So before I start my lecture about this argumentative essays, so I should let you know that like if you have any queries in between the lecture, so you may note it down, okay? And in the at the end of this lecture, you may ask me whatever you need to ask, okay? So let us get started with the argumentative writing. But first of all, let me clear one thing, students, that why argumentative writing is too much important for us. Argumentative writing is too much important for us because it is one of the the important part in the examinations. No matter I'm talking about the IGCSE examinations, no matter I'm talking about the GCE examinations, okay? So whatsoever it is, no matter like it's an O-level one, so no whatsoever I'm talking about, argumentative is one of the crucial part, and you need to know all about this quite efficiently because it carries an immense amount of marks in the writing parts, okay, in both the papers in IGCSE and O levels, okay. So first of all, let me tell you what argumentative writing is. बेसिकली इन शॉर्ट अगर हम इसको आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करें, व्हाट वी हैव टू कीप इट इन माइंड एवरी टाइम, ठीक है, एंड इट इज़ दैट argumentative writing is basically the writing where you argue your matters, ठीक है, where you present your thesis, sometime against and sometime in the favor of that. It is depending on the topic, and it is depending obviously on your own particular choices, okay. So in other words, like we talk about argumentative writing is basically a writing that requires you to investigate a topic, okay, that requires you to investigate a topic. This is quite important, right? Like it allows you to investigate a topic, and किस सेंस में वो हम आगे चलकर बात करेंगे, and to establish a position on the topic with the help of examples and evidences. ये बहुत important बात है, right? With the help of investigation and evidences, ये बहुत ही important बात है. Why? Because many times you are supposed to give a lot of factual life examples and evidence. Example evidences, यहाँ पे आप एक ही बात को एक ही तरह समझ लो कि ये either examples or evidences एक ही बात होती है. In the evidences in the terms of example as well. Okay? अच्छा, real life examples दोगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, right? So let me speak it once again, that argumentative writing is basically requires you to investigate a topic and to establish a position on the topic with the help of examples and evidences. ये बहुत important चीज़ है. I will share the PDF. I will share the presentations with you as well. The same thing आपको भी share हो जाएगा in your WhatsApp and other channels as well. Okay? अच्छा, अब argumentative argument है क्या? An argument is an objection. ये basically मैं एक argumentative ऐसे को just clear कर रहा हूँ, ठीक है? An argument is an objection raised in a response to a question, right? Raised to a response to a question. An argumentative ऐसे क्या होती है? Like एक जैसे objection होती है, और वो जो है वो एक ऑब्जेक्शन रेस किया जाता है अपॉन द पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चंस, ठीक है, ओके. एंड इन शॉर्ट, यू स्पीक समटाइम्स इन द फेवर और समटाइम अगेंस्ट द आर्ग्यूमेंट. ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम कभी फेवर में कभी बात कर रहे होते हैं. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप हमेशा अगेंस्ट जाओ टॉपिक के. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप हमेशा फेवर में जाओ टॉपिक के, राइट? It is up to you कि whether you want to go for the favor or against, and provided that क्या है कि you have strong points in it, ठीक है. So
It is all about the like first thing, right? An essay that provides an argument both the sides of an issue. तो यहाँ पे मैं पहले ही सारी चीजें बता चुका हूँ. Let's come toward the next slides over here. अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड हमें बता रहा है फॉर्मेट. अब क्या होना चाहिए भाई, असल काम तो हमारा यही है. दिस इज द मेन थिंग, राइट? स्लाइड लाइक यहाँ पे जो हमारे पास नजर आ रही है, ठीक है, इट्स फॉर्मेट ऑफ आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज. सबसे पहला क्या है भाई? इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन क्या है? लाइक आई विल लेट यू नो व्हाट इज हुकिंग, ठीक है? सो लाइक इन द फर्दर explanation I'll let you know. In the introduction, what you're supposed to do, you have to hook the reader. Means जगाना है थोड़ा reader को. अपने whoever the reader is of your essay, you should hook the reader. उसको जगाओ. Background information is important. Like for example, अगर हम introductions दे रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए. ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि लेट्स सपोज इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर्स के बारे में डायरेक्टली शुरू नहीं हो जाना है आपने. यू पीपल आर सपोज टू फर्स्ट लाइक टॉक अबाउट द कंप्यूटर्स, द हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर, नॉट अबाउट द मेन फ्रेम और द अदर, लाइक वो फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन वाली की बात नहीं कर रहा. Sometime what like somewhat like that कि why computer was important and why the people thought in the past that computer is supposed to be added in our life. ठीक है, एक शॉर्ट सी इंफॉर्मेशन, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हो जाता है. फिर हमारा आ जाता है थीसिस स्टेटमेंट. थीसिस स्टेटमेंट इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन. आप किस स्टेटमेंट पे अग्री कर रहे हो, यू आर गोइंग अगेंस्ट इट, यू आर गोइंग फेवर ऑन इट, तो उसके बारे में एक आपको छोटी सी बात लिखनी है. एंड दिस ऑल शुड नॉट गो मोर देन 7 to 8 लाइन्स. ठीक है, अगर इसको 2 डिफरेंट पैराग्राफ्स में लिखोगे इट विल बी मच बेटर. फर्स्ट पैराग्राफ गिविंग द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, एंड सेकेंड पैराग्राफ में आप अपना थीसिस स्टेटमेंट बयान करोगे. एक्चुअली यू आर इंट्रोड्यूसिंग द नाउ टॉपिक इंस्टेड ऑफ द हिस्ट्री, यू आर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक. ठीक है, एक तो ये बात होगी, राइट? नाउ कमिंग टूवर्ड द बॉडी पैराग्राफ्स. बॉडी पैराग्राफ्स में हमारे पास क्या है? आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर, काउंटर और इन फेवर और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, क्या चीज होती है? यू विल प्रोवाइड डिटेल्स एंड एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट योर थीसिस. ये वही पुरानी वाली बात जो एग्जाम्पल्स की बात कर रहा था. ठीक है, गुड. Okay, you will be providing the details and the example to support your thesis or to support your statement. ठीक है, जो भी आप जिस बात से एग्री करते हो. अभी सारे एग्जांपल्स मैं आगे जाकर दूंगा, you don't need to worry about it. ठीक है, you will also make a separate paragraph to give the counter arguments. ठीक है, counter arguments की जिक्र मैं बार बार यहाँ पर कर रहा हूँ. So actually what counter argument is? Counter argument is a claim that opposes your point of view. ठीक है, that opposes your point of view, and it is important to give the counter argument because like it allows the reader to know about the other perspectives as well. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है काउंटर आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, ये काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में कि आप अलाउ करते हो रीडर को कि आप अदर पर्सपेक्टिव में भी जाके बात करते हो. जैसे कोई भी टॉपिक आ जाता है, मोबाइल फोन्स आ गया और लाइक कंप्यूटर्स आ गया. अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि व्हेनेवर दे गिव यू इन द ओ लेवल्स पैटर्न्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि ओ लेवल्स में जब भी तुमको कोई आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज दिया जाता है, आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज जनरली वो काफ़ी आसान होते हैं. समटाइम मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, ठीक है, कभी कभार ही ऐसा होता है कि दे गिव यू वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, बट एवरी टाइम इट डजंट हैपन. लेकिन डिफिकल्ट भी वो डिफिकल्ट नहीं होता कि दैट गोज अबव योर हेड, ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है भाई. अच्छा, नाउ यहाँ पर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कई आपको दैट अलाउज द रीडर टू नो मोर अबाउट योर पर्सपेक्टिव. दैट इज काउंटर आर्ग्यूमेंट. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एग्जांपल्स, इन टर्म्स ऑफ हर जगह देखो एग्जांपल्स की बात मैं दूंगा. हर जगह एग्जांपल्स इसलिए देना, लाइक रिलेटिव एग्जांपल्स देना जरूरी है ताकि आप जो भी थीसिस स्टेटमेंट लिख रहे हो, यानी जो जिस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में भी बात कर रहे हो, वो उसको जस्टिफाई करो. यू नीड टू जस्टिफाई इट एज वेल. लास्ट में भाई हमारा आता है कंक्लूजन, जिसमें आप बात करते हो, जिसमें व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, यू रीस्टेट द थीसिस एंड गिव समरी ऑफ योर पॉइंट लिस्टेड अबव. ठीक है, जो कि आपने जो भी समरी, जो भी बातें कही हैं, जितनी भी बातें कही हैं, उसको समराइज करना. यू नीड टू रीस्टेट द थीसिस ऑफ योर स्टेटमेंट and give a summary of your point
whatever you have listed above, no matter you are talking about one arguments, no matter you have talked about 2 or 3 arguments or whatsoever, ठीक है. कोशिश है कि आपको एक एग्जांपल्स या एक थीसिस के बारे में बात नहीं करनी है. You are supposed to talk about multiple examples, ठीक है, on the related topics here. Right, now coming toward the next, now here I will let you know about what actually hooking is. Hooking is basically like, you can say, to grab the attention of the reader. बहुत एक पहले भी मैं ये बात कर चुका हूँ, ठीक है. Let's look all the previously mentioned points in the detail, ठीक है. अब थोड़ा सा हम सारी डिटेल जितने भी मैंने अभी जितनी भी बातें कही हैं, let's look into that. Hook is to grab the attention. I've told you about this. There are 2 ways to hook the reader. अब 2 different ways हैं to hook the readers. क्या है भाई? Number 1, start with a question. ये कैसे होगा? I will let you know. ठीक है? Start your essay with a question. ये बहुत important बात है. And state a fact. और second आपके बात आता है, state an amazing fact that may engage the reader. कोई ऐसा fact, ठीक है? Like what are those examples? I'll let you know about this. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपने रेस कर दिया, कोई भी आपने फैक्ट एंड फिगर्स के बारे में बात कर दी, ठीक है, तो लाइक उसमें जो है आप अपना एक रीडर्स का अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं. दिस इज बेसिकली हुकिंग, ठीक है. Provide some background information about the topic. This is why you let your reader know about the topic. You have to provide some background information. इसमें questions में या stating facts में आप ये सब कुछ बता सकते हो कि you can give, you can provide the background information, or you can you can let your reader more about the topic here. ठीक है. Now next आपका आ जाता है give your thesis. Thesis statement क्या चीज़ है? Give your thesis a clear statement. Give your thesis a clear statement. This shows a point of view about the topic. This shows a point of view, which points you are actually standing on the favor, standing against it. So this is basically a thesis agreement. ठीक है? I know there are still some sort of confusions are there, how to start and how to take it up, like how to end it up. I will let you know with examples here, right? Let's move on toward the next slides over here. Next slides क्या? अब आ जाती हैं हम examples के बारे में. Money can, अब एक बहुत ही important सी, एक बहुत ही common सी बात कर रहा हूँ. Money can buy you happiness. It's a kind of factual information. It's a kind of you can say emotional topic as well, and it is a kind of a debatable topic. So ultimately हम इसको क्या कह सकते हैं? We can call it an arguments. Some people will say yes, money can buy happiness. Some people will say no, money cannot buy happiness at all. ठीक है? So let's see here. Okay, can you even imagine living with? I told you last time. Starting your question, like starting your question with starting your statement or starting your informative paragraph, or sorry, introductory paragraph with a question. तो मैंने इस टॉपिक के लिए क्या बोला? Can you even imagine living without money? Is living without money even possible in this cash-driven materialistic world? ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन था. I just started with a question here, and both the questions are quite a weightage one. ठीक है. Money has always been a medium of exchange. Now I'm introducing what actually money is. Okay. For example, in the past, gold and silver were the most common form. Bartering, जो goods के बदले goods दिया जाता था, तो हम उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है. Golds and silvers were the most common forms of money. Therefore, money has become the central focus of many people's lives. ठीक है? S apostrophe S आना चाहिए था. But for me, money cannot buy you happiness. It can only entertain you temporarily. Right? This is my introductory paragraph that I tried to mention it. But still, students, I have tried it in short. मैं बहुत ज़्यादा मैंने इसको डिटेल में नहीं लिखा, लेकिन क्योंकि I am just explaining you this, that is why I put it on here like this. ठीक है? अच्छा, let me again tell you, you will get the recording of this as well. ठीक है? You will get the recording of this material, of this lecture,
and previously you will I mean even in your group, in your class group, you will also get the presentation of this as well, as I have made it over here, and I've just made it over here for you. Okay, सो नेक्स्ट पैराग्राफ जो है हमारे पास, नेक्स्ट स्लाइड्स जो है हमारे पास है बॉडी पैराग्राफ के बारे में. अब हाउ टू राइट द बॉडी, वो तो इंट्रोडक्टरी था, ठीक है. अब हाउ टू राइट द बॉडी पैराग्राफ हियर, राइट. सपोर्टिंग एविडेंस टू बैकअप द थीसिस स्टेटमेंट ऑफ एन एसे. अब वो सपोर्टिंग एविडेंसेस क्या, इतनी जो मैंने ये जो पीछे यहाँ पे बकवास की थी इतनी सारी, ठीक है, हाउ एम आई गोइंग टू सपोर्ट इट अप. सो I have to support it into 2 or 3 paragraphs, क्योंकि आपको वहाँ पे 300 to 350 words का essay लिखना पड़ेगा मेरे भाई. So that is the reason you are supposed to be a little bit detailed, ठीक है. In your perspectives as well should be detailed as well, ठीक है. अच्छा, कभी कभार कुछ टेक्निक्स होते हैं that you need to keep it in mind, वो मैं आगे जाकर डिस्कस करूंगा कि वो टेक्निक्स क्या हैं, what sort of techniques are there in order to divide your essays into within 350 to 400 words, ठीक है. चलो, coming back toward it, supporting evidence to back up the thesis statement of an essay. कौन कौन से supporting evidences होते हैं? 2 or 3 paragraphs, ये मैं body of paragraph बता रहा हूँ, ठीक है. 2 to 3 paragraphs on the support of this topic and 1 paragraph against it. अच्छा, एक और बता दूं, for counter argument, यानी 2 to 3 paragraph I made it on the support के yes के really money cannot buy you happiness at all, obviously, ठीक है. मैं थोड़ा सा इमोशनल होकर बात कर रहा हूँ यहाँ पर. money cannot buy you happiness, truth basically everybody knows money really can buy us, or like buy all of us a lot of happiness here, लेकिन मैं थोड़ा सा इमोशनल होकर थोड़ा गुड़ी गुड़ी बन रहा हूँ यहाँ पर, right. So I will talk 2 to 3 paragraphs in the favor of this. Yes, it is really, you are right, absolutely, that money cannot buy happiness at all. So I will support my thesis within 2 to 3 paragraphs, right. 2 paragraphs are recommended, 3 paragraphs करोगे तो ज़्यादा अच्छा है. वो कैसे होगा वो आगे जाकर मैं फिर बताऊंगा. यहाँ पे हम बबलिंग का एक ऑप्शंस देखेंगे, ठीक है. 1 paragraph for the counter argument. 1 paragraph for the counter argument means against it. अच्छा, against के बारे में एक और चीज़ मैं बता दूं स्टूडेंट्स. कैम्ब्रिज हमेशा अच्छी अच्छी बातों को जो है ना वो बहुत ज़्यादा they always welcome you that. Cambridge always welcome you upon positive attitudes. Cambridge always welcome you upon your positive points. ठीक है. So better to stay on the positive points rather than going toward the negative. ठीक है. So it is, I would not recommend you this. But even if it is not at all important, there is no right and wrong marks for that. So you can go either of it, whatever you personally think. But whatever the vocabularies you are using, you should use a very modified vocabularies and very what should I say, the very formal and academic vocabularies there. ठीक है जी. Now over here, coming to the next slide over here. Now what is my counter arguments over here? Money cannot buy you happiness. Is my further explanation. Money cannot buy you happiness here because people work like this paragraph is basically on the support of this topic, right? So I'm supporting this. Okay, so let me read it. Money cannot buy you happiness because people work tirelessly every day to make money. Moreover, most people do not have enough time to spend their hard-earned money. The reason being their busy routine and heavy workload. Still, I'm supporting this topic, okay? I mean, really, money cannot buy you happiness, of course. Apart, they have no time and energy for the leisure activities, and needless to say, their friends and families hardly spend any time with them. As a result, the feelings of loneliness and depression override happiness. In fact, these stressful life events are a major cause of depression, according to science. मैंने according to science मतलब ब्रैकेट में ये एक थीसिस के बारे में मैंने बात कर दी, एक रिसर्च के बारे में मैंने बात कर दी, ठीक है. And it is this paragraph I'm here thus supporting it, okay. And according to the science, you know that it, like, there are certain sort of you can say research on that. There are certain sort of thesis is already present over there. So I just wrote it shortly according to the science. It will give you a little bit strong outlook of your essay, which is what you are supporting it. ठीक है.
तो you can add it as a form of according to the sign in a form of bracket, और कुछ और अगर याद आ रहा हो तो आप वो भी लिख सकते हो. There is no problem at all. Coming toward the next slide over here, and here uh, I am continuing with the counter arguments here. Counter argument क्या चीज होती है? I have already told you. However, अब ये however क्यों मैंने यूज किया? However, transitional words, last time मैंने आप लोगों को बताया था कि these transitional words are the game changer in the essay writing. So if you will uh, learn all these like transitional words into the very good manner, obviously ये बहुत बहुत कुछ तुम्हें देने वाला है. ठीक है? It will definitely take you toward the next level, students. ठीक है? अच्छा जी, आगे आते हैं. However, from the different perspective, people say that money can make you happy. For some, earning enough money to pay their monthly expenses and having food on their tables make them happy. It's my counter argument going against it. Furthermore, again, the transitional words, furthermore, however, although, even though, right, despite, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें तुमको याद होनी चाहिए कि what are the uses of these, right? And obviously these are very important in writing. So being able to buy what you want and going on your dream vacation can buy you peace of mind as well. And Mark Twain also says the lack of money is the root of all evil. To some extent, money can buy you happiness. Mark Twain is one of the writer of novel, okay? But it will be the temporary, as no amount of wealth is seen as enough by the people, right? So यहाँ पर मैंने मार्क ट्वाइन का जिक्र किया. मार्क ट्वाइन एक बहुत फेमस राइटर है. यू कैन ऐड सम अदर्स, ठीक है, जैसे कि जॉनथन स्विफ्ट है, जेन ऑस्टन है, ठीक है. इस तरह आप जो है किसी जो भी आपको रीडर राइटर्स का नाम आई मीन याद आए, यू कैन add it. It will give you more strong look to your essay, right? Next क्या है भाई? हमारे conclusion में आते हैं हम. इसमें हम कहेंगे कि restate the thesis, मतलब जैसे whatever you have spoken, you have to justify that, give a summarized thesis on that, and do not introduce the new point. ये बहुत important चीज है कि conclusion में students कभी भी कोई नया point इस्तेमाल नहीं करना. Do not try to use any new examples. Do not try to use any new points. In conclusion, you are only allowed to talk about the things that you have already mentioned above in the paragraphs. No matter the body paragraph 1, 2, 3, counter arguments में कुछ भी कर रहे हो तो उसमें आपने conclusion देना है. ठीक है? Conclusion एक short सा क्या है भाई यहाँ पर? In short, I have like एक minute. Okay, I have short में क्या है? छोटा सा मैंने I have just written it in a very shorter manner. In short, I have come to the conclusion that actually word I have, sometime it is better to use, sometime it is not. So you can passivize this as well. Sometime in short, I have come to the conclusion that money can buy everything, but everything material, right? And everything material, ये hyphen हम क्यों लगाते हैं? We always use it in order to define the particular word जो कि hyphen से पहले लिखा हो. Everything को मैंने यहाँ पे define किया है, but everything material. It cannot buy happiness. It does not have the power to buy you a loving family or true friends. Ultimately, तुमने अच्छी अच्छी बातों को quote कर दिया, right? This is the reason why Benjamin Franklin said. Benjamin Franklin, one of the American, you can say revolutionist. Okay? Benjamin Franklin, money has never made man happy, nor will it. ना कभी किया है, ना कभी करेगा. Benjamin Franklin की जगह मैं यहाँ पे I can talk about Mr. All the Americans जितने भी, I don't know what are their names, बहुत ज़्यादा नहीं हूँ मैं, I'm not that much proficient with the writers' names here. ठीक है, Benjamin Franklin's है, or we can say I'm not coming in, the names are not coming in my mind at the moment. ठीक है, but there are so many Americans names are there, right? Let me think, wait. We have got Benjamin Franklin, Washington, Mr. Washington, George Washington, ठीक है? We have other
Mr. Lincoln, Abraham Lincoln, ठीक है. So these are some of the American revolutionists जिसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है. इसके अलावा you can go for the contemporary one as well, ठीक है. जैसे कि हमारे पास like Microsoft के CEO हैं, ठीक है, और जैसे कि हमारे पास Facebook के CEO हैं, right. और तो इस तरह एकदम से मैंने नाम पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हो गया कि why their names are not coming though they are so much famous. You can bara. Chalo ji. So you can give the example of these people as well. Okay, coming to the next slide here. Let's say you are talking or writing about internet. Okay. So if you want to go against it, you may write more because you can write more in this way. So select your thesis wisely. Like examples, for example, internet does more harm than good. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हार्म में जाना चाह रहे हो गुड में, लेकिन गुड में रहोगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है. हार्म में यू कैन ऑब्वियसली ऐड इट, राइट. अच्छा, इसमें हम एक पिरामिड्स टेक्निक इस्तेमाल करते हैं. पिरामिड्स टेक्निक का क्या मतलब होता है, यहाँ पर मैं बताऊंगा कि whenever you are having any sort of difficult topic or easy topic for your argumentative essays or any other essays, ठीक है, तो आप एक पिरामिड टेक्निक्स यूज करोगे. जिस तरह हम फ्लो चार्ट कंप्यूटर में बनाते हैं, एक हमने टॉपिक बना लिया और टॉपिक बनाने के एक टॉपिक लिख दिया कि भाई इंटरनेट डज मोर हार्म्स टूवर्ड देन गुड्स. तो गुड्स का एक बॉक्स बनाया. हाउ मेनी थिंग्स कैन कम इन गुड लाइक अर्निंग, सेविंग टाइम, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स. तो सारे गुड वाले एक जगह हमने फटाफट लिख दिया. इट्स अ रफ वर्क. एंड बुरी चीजें, द बैड थिंग्स, वी ऑल्सो गिव इट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. तो ये इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ लुक कि आप यहाँ क्या क्या पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, ठीक है. सो मेक अ बबल ऑन दैट, ठीक है. So you give your strongest points or arguments first, then you go relatively for the weaker ones. पहले तो सबसे पहले ये चीज बहुत important है, always go for your strongest points, ठीक है. Like never go for the weaker point. जो जिस पे तुम बहुत ज्यादा proficient हो, उस पे जो है सबसे ज्यादा बात करो और सबसे ज्यादा लिखो, right? The weaker ones support your thesis. In this way, you will strengthen your claims, ठीक है. आपके weaker points को आप सिर्फ जो है like a weaker ones, just speak it in English, ठीक है. Weaker ones to these weaker you should add the weaker ones in order to support your thesis, and in this way you will strengthen your claim. What claim? That you have written in the favor of internet. तो इस तरह करके आप bubbles बनाकर points लिख सकते हो. It will give you a little bit quicker look, right? अच्छा, repetition क्या है? Why prevent repetition here? Repetition is something that makes your repo weaker. Repetition of sentences, repetition of vocabularies, repetitions of all these things, चाहे statement की बात करोगे, so all these things will make your thesis very weak. So avoid करो repetition. IELTS में भी नहीं होता, Cambridge में भी नहीं होता, IGCSE में भी नहीं होता, ठीक है. I mean O levels में भी नहीं होता, क्योंकि सारे ये Cambridge की चीजें हैं. So always make a rough draft. एक हमेशा topic, whenever the topic comes in front of you, you should make a rough draft before writing and think of all the arguments you will write. Think of all the supportive point you will write. तो एक एक कॉलम बना दो, बॉक्स बना दो, बबल्स बना दो, whatsoever बना दो, लेकिन it will give you a little bit of quicker look. नेक्स्ट है ये जो आपको यहाँ पर व्हाइट सेंस में नजर आ रहा है, ये एक एग्जामिनर कमेंट्स है, इसको आप खुद भी पढ़ लीजिएगा, समझ जाएंगे आप, ठीक है. नेक्स्ट आता है रिमेंबर, इफ यू आर नॉट कन्विंसिंग योर एसेज, इन योर एसेज यू विल नॉट बी इट विल नॉट बी गुड फॉर यू. कन्विंसिंग होना चाहिए, बी कन्विंसिंग. फॉर कन्विंसिंग व्हाट यू विल डू, यू गिव एग्जांपल्स. अब कर क्या सकते हो, you give examples to support your claims, and what should be added in the examples? Facts and anecdotes, ठीक है. anecdotes जो है वो और facts आपको जो है उसको add करने पड़ेंगे. मीन्स कि I told you earlier कि आपको बहुत ज़्यादा you should give like factual examples, कोशिश करिएगा, ठीक है. and anecdotes होता है क्या? It's a briefly story or a piece of writing that illustrates the point or convey a message, ठीक है. एनेक्डोट्स क्या होती है? इट्स अ काइंड ऑफ अ सॉर्ट ऑफ अ पॉइंट होता है, ठीक है. एक ब्रीफ स्टोरी होती है, एक ब्रीफ हिस्ट्री होती है, दैट इलिस्ट्रेट योर पॉइंट, दैट शोज योर पॉइंट्स, और दैट कन्वेज अ मैसेज टू द रीडर.
ठीक है, अगेन वही वाली लास्ट में बात है, यूज ट्रांजिशनल वर्ड्स, इफेक्टिव ट्रांजिशनल वर्ड्स जो है बहुत 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 जरूरी है स्टूडेंट्स। ये आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू द सेपरेट शीट फॉर दीज, अगेन आई विल प्रोवाइड यू दिस, सो ट्रांजिशंस को हाथ से जाने नहीं देना। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, ये एक practice है, ठीक है, that I'm going to give you for this, and this practice, okay, going to the university is the best way to get a good job, or do you agree with this? Give reasons and examples to support your view, and you're of course you're supposed to write 350 to 500 words limits। मैंने 350 to 400 बोला है, तो ये बेसिकली IGCSE में जो है 500 होता है, लेकिन आपको यहाँ पे भी 400 वर्ड, लेकिन यहाँ ऑब्वियसली आपको 400 वर्ड्स का नहीं लिखना है, मैक्सिमम आपने 200 वर्ड्स पे जाना है, बट यू आर सपोज टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस दैट आई gave you, right? So these are the things students, ये एक examples है, ठीक है, I'll give you more like argumentative essays over here, okay? अच्छा, अब इसी में अगर इस टॉपिक की हम बात करते हैं तो इसके अगेंस्ट और इसके फेवर में ये बातें हो सकती हैं, राइट? कि इन फेवर अगर मैं बात करूं तो अब जिस तरह मैंने एक रफ पॉइंट बना लिया, अब ये इतना सारा कुछ नहीं लिखना, आई कैन ओनली राइट ओनली फ्यू वर्ड्स टुवर्ड, ठीक है, कि इन फेवर में बेनिफिट्स ऑफ यूनिवर्सिटी डिग्री क्या है, स्किल्स आ जाती हैं, जॉब सिक्योरिटी आ जाती है, और इसमें मैंने क्लास में एग्जांपल दे दिया कि अकॉर्डिंग टू द फला 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 सर्वे ये सारी चीज़ें पार्ट टाइम और फुल टाइम वर्क में ये चीज़ें मिलती है। अगेंस्ट में क्या होती है, कौन सी भाई अगेंस्ट में, डू यू एग्री गोइंग टू द यूनिवर्सिटी द बेस्ट वे। अब मैं अगेंस्ट हूँ कि भाई यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है मुझे, सो स्किल ओवर डिग्री मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ भाई, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो मैं ज़्यादा काम जो है अकेले करना चाहता हूँ। एग्जांपल ऑफ द बिल गेट्स है, वो जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा था वो यही साहब थे, बिल गेट्स हैं, स्टीव जॉब्स हैं, मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक के, तो all these people you can give the example of all these people who had been successful without degree। लेकिन again let me tell you, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स या मार्क जुकरबर्ग, हम जिसकी भी बात करेंगे, they are still having I mean a very refined sort of degrees in their hands, and I've given an example। 2017 में इन्होंने फला शुरू किया, पेंगुइन रैंडम शुरू किया, ये शुरू किया, मार्क जुकरबर्ग ने एक कमरे से जो है अपना फेसबुक का हिसाब किताब शुरू किया। दिस इज व्हाट आई विल गो अगेंस्ट एंड फेवर ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है माय स्टूडेंट्स। दिस इज द थिंग दैट you will also get it in your class as well, ठीक है बच्चे, thank you so much। now you are welcome with the questions।